Good evening, everyone. Welcome. I am Rudolph D'Souza, your host today. Uh, we are from MyNation Hope Foundation. We are actively helping men for last 20 years. We have more than 10,000 members registered with us. Our service is totally free. We are not like others who is charging for joining fees or advising or anything. Please join us. Those who are interested to join for free service. Uh, in today's Men Ki Baat, we are discussing with our new member, Mr. Sriram Yadav. Good evening, sir. Okay. Welcome, Sriram Yadav. ओके Please introduce yourself. जी, मेरा नाम श्रीराम यादव है। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से हूँ। अच्छा मेरा मेरे पापा रेलवे एम्प्लॉय रह चुके हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। और मेरी घर में मम्मी है और एक बहन है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, और एक भाई है। ओके। और क्या उम्र है? जी, मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओके। शादी शादी के बाद जी, कितना शादी साल साथ में थे? 2015 में हुई थी। हम्म। शादी के कितने हाँ जी। कितने साल साथ में? शादी के लगभग 1 साल तक वो साथ रही। फिर ओके। मतलब 1 साल में भी उसने मतलब बहुत बार उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया मुझे। क्योंकि हम्म। उसे जैसे ही पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चा गिराने के लिए, अबॉर्शन करवाने के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगी। उसके मम्मी-पापा अच्छा, और वो। तो मैंने तो इस बात फिर बच्चा नहीं है तो शादी क्यों किया? हाँ, उनके पापा ने बोला था, उसके पापा बोलते हैं कि आपने मेरी बेटी को जल्दी प्रेग्नेंट कर दिया है। आपको अच्छा। थोड़ा-सा। अच्छा, मतलब कब प्रेग्नेंट करने का, कब नहीं करने का वो लोग बोलेंगे? हाँ, ये उनका कहना ये पड़ रहा था कि वो सब कुछ बताएँगे। उनके हिसाब से मेरा घर जो है वो उनके हिसाब से अच्छा, चलेगा। मतलब जैसा वो लोग बोलते हैं ऐसा नाचना पड़ेगा, ऐसा वो हाँ, लोग का मतलब वो था। हाँ, हाँ। तो अच्छा। ये बात मैंने नहीं मानी, तो और वो धमकी देने हम्म। लग गए कि हम दहेज का केस लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और हम्म। बस वो जैसे ही प्रेग्नेंट हुआ, मालूम पड़ा, लेके चले गए उसको यहाँ से, पता नहीं क्या किया उसको वहाँ ले जाकर। तो बच्चे के पेट हम्म। में मतलब जो बच्चे कुछ किया उन्होंने, तो बच्चे के पेट में पानी चला गया था प्रेगनेंसी टाइम में ही। 3 जस्ट मतलब अच्छा। जस्ट जो 1 सवा महीना ही हुआ था जब, आफ्टर 1 हम्म। 1 मंथ। तो बच्चे हम्म। के पेट में पानी चला गया, तो वो उन्होंने वहाँ पे इलाज नहीं करवाया उसका। उन्होंने वहाँ पे अच्छा। यहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो सब बढ़िया था, ठीक-ठाक था बच्चा। वहाँ से हम्म। जैसे ही मतलब फ़ोन करके वापस उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तो वो खर्चा नहीं उठाना चाहते थे उनकी बेटी का, प्रेगनेंसी का। अच्छा। अच्छा। तो वापस मुझे बुला के बोला कि इसको ले जाओ और इलाज वगैरह करवाओ। तो हम लेकर आए वहाँ हम्म। से। यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया, तो बच्चा, उन्होंने डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि बच्चा बचेगा नहीं, क्योंकि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा, बोले पल्स जा रही है बोले, पल्स बहुत हम्म। लो मतलब है। वो लोगों ने एबॉर्ट करने को कोशिश किया था? कुछ किया था उन्होंने अबॉर्ट करने का, फिर उसने कुछ खिलाया-पिलाया, कुछ भी जो भी कुछ किया था। क्योंकि उसने बताया भी अच्छा। था कि मेरी मम्मी बोले मुझे काढ़ा बना के पिला देगी, जिससे पहले बच्चा गिर जाएगा। अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये केस तो जाने से पहले डाला था और या बाद में डाला? जाने के मतलब ये केसेज़ जो हैं वो जुलाई 2018 में किए, अच्छा, बच्चा होने के बाद। बच्चा होने के बाद किए। अच्छा, कौन सा केस डाले? केस उन्होंने 125 किया। मैंने उधर से मतलब वो जो 2016 में वो चली गई थी, बच्चा हम्म। हुआ था 30 नवंबर 2016 को, और वो हम्म। जनवरी 2017 में वो यहाँ से चली गई थी। तो तुम्हारा घर से? हाँ, लड़ाई वगैरह करके कि ओके। मतलब कि बच्चे का मुँह नहीं देखने देंगे, तुम्हारे को बच्चा हो गया, मतलब इस तरीके से धमकी हम्म। दे के वो चली गई थी। हम्म। फिर हम्म। अ, वापस उसको जैसे-तैसे घर पे जो मना-मनू के लेके आए पापा वगैरह, अंकल वगैरह जाके, फिर 1 महीने फिर हम्म। रही और फिर चली गई, क्योंकि उसको अच्छा। मेरे साथ रहना ही पसंद नहीं था। अच्छा। अच्छा, हुँ। वो, या तुम्हारा जो रहना
विलेज टाइप था या वो शहर शहर वाली थी या विलेज विलेज दूसरा की। कुछ प्रॉब्लम? वो नहीं, वो विलेज की थी। मैं तो शहर का हूँ। वो उनको वो उनका कहना ये था कि मम्मी पापा से बात, मतलब जैसे बच्चा हो गया उसके बाद जैसे मम्मी पापा से अलग रहो, अलग मकान रह के लो, सैलरी पूरी उनके हाथ में ला के रखो हर महीने। अच्छा अच्छा, वैसा वो है। कंडीशन था। हाँ। अच्छा अच्छा। और ये केस डाला तो किसी फैमिली मेंबर के ऊपर डाला था या सीमा तुम्हारा ऊपर सिर्फ डाला? 125 में उसने उल्टे एलिगेशन लगाए ये कि मैं बच्चा गिरवाना चाहता था। मैंने हम्म जब पेट में था तो उसके पेट में मैंने लात मारा, इस तरीके से एलिगेशन वगैरह लगाया उसने सब कुछ। और मेरे हम्म। मम्मी ने मारा लेकिन उस सब तूने तो उसको लेके आके इलाज करवाया, जिधर हाँ बच्चे का साथ उसका तबीयत खराब था वो टाइम में घर पे लाके इलाज किया, फिर भी हाँ तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा? हाँ, वो पूरे मतलब 8-10-12 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। और हम्म मतलब बच्चे के लिए सब कुछ अपन ने जो सारे जो पूरे शहर के जो गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं, मैंने सबसे पूरा सबको हम्म जाके बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी कि सब जहाँ से भी सही हो जाए, बच्चा हो जाए सही। हम्म हम्म। अच्छा। और उसने केस का जो केस किया था वो टाइम में जो भी बोला था, लाइक वो तुम घर पे आके पी के मारते हो, हाँ दहेज हाँ, का ये सारे एलिगेशन डिमांड उसने करती हो। निकाले हैं। हाँ, बोले वहाँ खुलेआम बोल रही जज के सामने कि हम्म। वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी, कि वो लेडीज जज ने उसने पूछा तो उसने बोला खुलेआम कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी। और अच्छा, जज भी कुछ नहीं क्यों बोला, नहीं जज। पैदा करने चाहते? हाँ, बच्चा नहीं पैदा करना है, उसके पापा ने बोला, बोले मेरी बेटी को बोले जल्दी माँ बना दिया, जज के सामने कोर्ट रूम में ये बोला उसने। अच्छा, तो उसको बच्चा नहीं करने का है तो शादी क्यों करवा? हाँ, जज ने भी उससे यही क्वेश्चन पूछा था और उसको बाहर हम्म निकाल दिया था वहाँ से कोर्ट रूम से। तो उसने हम्म एक फॉल्स कंप्लेन मुझे थाने पे लिखवा दी कि इसने हम्म मतलब जज ने उसके साथ ऐसा करा तो उसकी जो वो मन में वो रहता मनमुटाव मुझ पे निकालने के लिए उसने फॉल्स रिपोर्ट करवा दी थी कि ये हम्म। मुझे मारा पीटा, कोर्ट में मारा कूटा, ऐसा करा वैसा करा, मेरे पापा को मारा, हम्म। गालियाँ बकी। कोर्ट अब में? हाँ, कोर्ट के। कोर्ट में तो हजार लोग रहते हैं, तो हाँ कोर्ट में कैसा मार सकते हाँ, वही वही, और पुलिस वालों का फ़ोन भी आया था मेरे पास, बोले आप थाने आ जाओ, बोले आपने आपकी पत्नी के साथ ऐसा-ऐसा करा। तो मैंने बोला सर हैं? मेरी वाइफ़ झूठ तो बोल रही है। नहीं, ये पुलिस ने इंक्वायरी नहीं किया कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ था क्या? क्योंकि कोई ना कोई देखा हुआ रहेगा या ऐसा कोर्ट में मारते हुए, तो पुलिस ने कुछ इंक्वायरी नहीं की? नहीं किए सर, ऐसा कुछ भी। अच्छा, मतलब वो पुलिस भी वो लोगों के साथ मिले हुए थे? हाँ, रिपोर्ट लिख ली ना उन्होंने मेरे पे, जब उधर से मैं लौट के आ रहा था तो मेरे पास फ़ोन आया कि आप बोले यहाँ थाने में आ जाओ, बोले आपकी पत्नी ने कंप्लेन की है, आप बोले आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, this is what happening everywhere in India, because हाँ, just on simple words of a woman, police are taking their complaint because it's there in the law books, so they have to take the complaint, but without verifying any the fact or anything, they are just registering FIR and even many times they are filing charge sheet also without inquiry, without calling anyone. मैंने सर Anyway, बोला ना पुलिस uh, से, मैंने बोला उनसे कि वो महिला है वो झूठ बोल रही है और कोर्ट में हुआ है तो कोर्ट में उनको कंप्लेन करना चाहिए थी जज के सामने। जज के सामने जब कंप्लेन करने हम्म गई थी तो उनको भगा दिया गया था जज के द्वारा। तो वो अच्छा। पुलिस वाले बोलते हैं कि बोले महिला बोले सच बोलती है, बोले आपको आना पड़ेगा, हम्म महिला झूठ हम्म। नहीं बोलती। अच्छा, हाँ हाँ। This is the another biggest lie of our legal system, that Ablanari, woman is Ablanari. Whatever she says is gospel truth. She will never tell lies, even she murder or whatever. She is innocent or victim. Yes, That is the mentality of our legal system. yes, yes। Anyway, उसका बाद उसने 125 डाला था, उसका क्या हुआ? 125 डाला था सर उसने, वो बच्चे को जब वो उसको पैसे चाहिए थे तो वो बच्चे को लेके आती थी। और जब उसका हम्म मेंटेनेंस जब खारिज हो गया, मतलब जैसे पापा शांत हुए तो वो आ गई थी मेरे साथ रही। फिर वही वापस हम्म वही मेंटल प्रेशर में उसको साथ में अलग भी रह के रहा। तो अब उसको पति के हम्म साथ भी नहीं रहना था।
मतलब मेरे परिवार से अच्छा। दिक्कत नहीं समझ में आता है, अब वो मेरे साथ भी अकेले नहीं रहना चाहती। अच्छा। और क्या पापा उसको क्या चाहते चाहिए था? लेकिन उसको चाहिए क्या था उसको? उसको मुझसे बोलती है, बोले सारी सैलरी मुझे ला के दो, अपने माँ-बाप से हम्म। मतलब जो माँ माँ है मेरी, जो विधवा माँ है, उससे बोले बात नहीं करोगे, अंकल हैं उनसे बात नहीं हम्म। करोगे, मेरे साथ रहना है तो बस मेरे साथ हम्म। अकेले रहना पड़ेगा और जहाँ मैं चाहूँगी वहाँ रहना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, That means you should not allow your family members to talk to you. You should not give them money. Whatever money you are earning, you have to हाँ, give it to her only, and she हाँ, will handle the money. And she is happy with her family, and she want to live with her mother and father, not with your family. हाँ, इतना तक सर, So, मैंने एक बार मेरी मम्मी के यहाँ पे खाना खा लिया तो उसने 100 डायल कर दिया कि ये मेरे साथ मारा-कुटी कर रहा है। acha. हाँ, So this is the reality of every Indian home. Most of the time, even small issues, they will call police because they have support from WCD and NCW. And police are doing whatever those ministries says. And even now, when there is a incident of where they can make some name or it comes in headlines, NCW comes there and they do some drama, and even they tweet and they support. But when the real incident happens, where bahu or daughter-in-law torture a mother-in-law, no one is coming, no one is tweeting. The NCW is not a single tweet supporting such mother-in-law or old woman. Even their mandate itself says mother-in-law is not a woman. Okay, that is the situation. They are getting yearly 50,000 crore fund from government of India. What yes, they are doing? They are saying old women are not women. This is the situation of our India, yes, sir। our legal system, and our lawmakers are blindly watching. Uh, Silently, they are not doing anything. एनसीडब्ल्यू की Anyway, नज़र में तो मेरे uh, जो महिला ही जो बहू है वो ही स्त्री है, बाकी और कोई स्त्री नहीं है। yes. और कस्टडी का केस था, उसका क्या हुआ? सर कस्टडी के लिए मैंने अभी केस करा नहीं है, मेरा विजिटेशन का हम्म। एप्लीकेशन पेंडिंग है। विजिटेशन हम्म। अभी दिया नहीं है, मैंने डाल चुका हूँ। और वो ना तो वो मनी ऑर्डर ले रही है, मनी ऑर्डर भी कर रहा हूँ मैं उसको 4-4 हज़ार के, तो एक भी बार उसने मनी हम्म। ऑर्डर लिया नहीं है, क्योंकि 4,000 अच्छा। मेंटेनेंस हुआ है बच्चे का। अच्छा, मतलब तो रेगुलरली भेज रहे हो और वो ले नहीं रही? नहीं सर, वो नहीं ले रही है और ना Yes, ही हमें you are वो doing गिफ्ट your कुछ कर duty रही है। as per the order. You are following the obeying the order of the court, honorable court, and यस, she is denying. It's good. यस, You are sending regularly. यस सर, Uh, yeah, that is the right thing you are doing. This is the another example. Men are following the law and women are breaking the law. Okay. What is the यस। outcome of your case? तो वो जो भी झूठा एंट्री केस डाला था उसका क्या हुआ? एंट्री मेंटेनेंस जो हुआ है वो उसमें अभी तक वो क्रॉस में नहीं आई है। अभी जैसे कि हम्म। फिलहाल में कोर्ट भी बंद है कोरोना की वजह से, तो अगली जो हम्म। डेट है उसकी क्रॉस की ही होना है। तो क्रॉस में जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा, क्योंकि जो भी एलिगेशन लगाए उन्होंने वो सारे फॉल्स हैं, कि हम्म। उनके पास कुछ भी सबूत नहीं है इसका। ओके। ओके। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन, उसने बहुत सारे झूठ बोले थे हाँ, एफआईआर में या कोर्ट में, सब हाँ, जगह। इवन एफिडेविट शी गिव फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स कंप्लेंट्स। हाँ, पुलिस ने या कोर्ट ने कुछ हाँ। उसको पिनलाइज किया, नहीं सर, वो कुछ उसने सजा दिया? रिटर्न आर्गुमेंट में दिया था कि ये इसने एफिडेविट पे झूठ लिख के दिया है कि वो नौकरी नहीं करती है। खुद ने हम्म। झूठ लिख के दिया कि कोई नौकरी नहीं करती है, जबकि मैंने आरटीआई से सारी डिटेल निकाल के कोर्ट के हम्म। सामने रख दिया कि ये वहाँ स्कूल में जॉब कर रही है, पर फिर भी जज हम्म। साहब ने एक भी बार उसको कुछ एक शब्द नहीं बोला कि आपने झूठ बोला। अच्छा, मतलब हाँ, वो झूठ बोलेगा तो भी उसको कुछ होने वाला नहीं है. दिस इज द हाँ, सिचुएशन ऑफ आवर लॉ सिस्टम, because they are encouraged by the legal system. Even they are telling lies, coming to the court with unclean hands, giving writing in affidavit with false claims. Courts are not charging them anyone.
That's what the legal system openly support them and encourage them to file all the false cases. Recently, there was a news also because of these false cases. They are more than the actual cases, and the real women and other real cases are backlogged, and they are not getting the dates just because of these false cases. All because of the NCW and WCD support for false cases and women. Thank you, Sriram, for being with us. Okay. Here, thank you Okay. for your time and Okay. telling your story. Uh, Thank you. Okay. Uh, Thank you. right now, we will continue with our next session. Anyone who want to be on Men Ki Baat, please contact us. You can speak to your tell your story, real one. We are not prompting you anything. You are telling whatever happened to you, how our legal system is treating you. Because men in India, they don't have any laws for them. We are not asking make laws for us. We are asking make equal laws. When there is a domestic violence for women, why is not for us? Men cannot tell anything. Where to go? Whom to report? There is nothing. Please come forward, join us. Please visit mynation.net. There is a link. You can contact us. We will be on our next session. Hereafter, Dr. Vikas Singh Rawat will continue with our next session. Dr. Vikas Singh, please continue. Thank you, Rudolph sir. Thank you, Sri Ram Yadav ji. So today we going to today our speaker is Mr. Nagaraj Thadur. Mr. Nagaraj is a MRA and Secretary of MyNation Hope Foundation. Today he going to share his experience on the maintenance and the welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007. So I like to welcome Mr. Nagaraj Thadur to start his presentation. Thank you. Thank you, one and all, for inviting me for this wonderful webinar. At the outset, I would like to thank the founder of this foundation, Ruda, who's been fighting against this gender bias laws for more than 2 decades and giving us platform to share our experience and also help lakhs of people across the country. In this occasion, I have been asked to give a webinar on maintenance and welfare of Senior Citizens Act 2007. This is the only dedicated act meant for our parents. When this was actually promoted in social media that we are giving a webinar on this particular topic, I was surprised that a couple of people are not even aware that there is such act exist. Well, now you will actually realize if it is really required in India to have such an act. Let me a simple video which was published by ABP News channel. Then you will know the severity and need of this particular act in India. हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा वीडियो जो वायरल हो गया है इंटरनेट पर, और इस वीडियो में एक बहू दिखाई दे रही है जो अपनी सास के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है वो दिखाई दिया। यूपी के कौशाम्बी का है ये वीडियो। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। इन तस्वीरों में इंसानियत तार तार होती नजर आ रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में एक बहू की दरिंदगी नजर आ रही है। सास हिलने से भी लाचार है, बिस्तर पर पड़ी है, पर बहू ध्यान रखने की बजाय थप्पड़ बरसा रही है। बेरहम बहू बर्तन से मार रही है। ये जल्लाद बहू सास को चारपाई से नीचे फेंक रही है। एक बहू की बेरहमी का ये वीडियो वायरल हो चुका है। ये वीडियो बनाया है
यूपी के कौशाम्बी जिले के हेडक्वार्टर मदनपुर में रहने वाले एक शख्स झल्लर चारपाई पर पड़ी बीमार मां के बेटे हैं। चारपाई पर पड़ी बुजुर्ग महिला है शांति देवी। शांति देवी को करीब 6 महीने पहले लकवा मार गया था। शांति देवी की ना तो हाथ पैर हिलते थे और ना ही वो बोल पाती थी। तस्वीर में दिख रही यह है बहू सरिता, जिन पर झल्लर ने जिम्मा सौंपा था उनकी गैरहाजिरी में मां का ध्यान रखने का। पर जो सरिता ने किया वो तस्वीर में नजर आ रहा है। हमारी पत्नी समथिंग 5 महीने से टॉर्चर कर रही थी। उन्होंने काफी दवा कराने के बाद भी उनसे मैंने कहा कि तुम मारती बोली, हम मारती ऐसा उन्होंने बिहेव किया कि हमको यकीन करना पड़ा कि भाई ये जो बोलेंगे तो मारेंगे क्यों। मगर फिर भी उसने माना नहीं, तो उनको हमारे एक मित्र सलाह दी कि आप अपने CCTV कैमरा लगा लीजिए। तब हमने लगाया तो सारी जो आप वीडियो देख रहे हैं तब इसका सारा निष्करण निकला। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लाचार बुजुर्ग महिला की बेटी झल्लर ने पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है। वो पुलिस से कार्रवाई तो चाहता है, लेकिन साथ ही ये भी चाहता है कि पत्नी को जेल न भेजा जाए। दूसरी तरफ अपनी गले खुलने के बाद ये बहू पति का घर छोड़कर मायके भाग गई है। सीसीटीवी में कैद बहू की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब तक इसको सैकड़ों लोगों ने अलग अलग कमेंट्स के साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के बाद लोग आरोपी बहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग कर रहे हैं। Now, probably you would agree to my terms that yes, India needs Senior Citizen Act. It's so outrageous to see that India is in a situation wherein law has to come into effect in order to keep things under control. Are we not ashamed of it? Is it not our bound responsibility to look after our parents and in-laws? Well, no doubt, India is growing old. The stark reality of aging scenario in India is that there are 77 million older persons in India today. And the number is going to grow to 177 million in another 25 years of time. Well, with this kind of an aging scenario we have in India, there is pressure on all these aspects of care for the older persons. It could be financial, it could be health, shelter, whatnot. Well, elder abuse is a topic that is usually not acknowledged by others or even hidden by the own victims. You may be surprised why victims are not come forward. Well, it's so silly to say, but no parents will usually dare to file any case against own kids or in-laws. In most of the cases, immediate relatives like the son or daughter-in-law, or even some cases the daughter or son-in-law, or even nephews, niece, grandchildren, whoever, they subject senior citizens, parents, to many kinds of abuse. It could be physical, it could be emotional, verbal, material, or financial. And also we have seen lot of cases wherein older adults are faced abuse in the form of negligence. What is the Senior Citizen Act? After repetitive cases reported in media and in social media, news channels, and series of complaints in police stations, etc., Parliament decided to come up with an act called Welfare of Senior Citizens Act 2007. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 was enacted to provide financial security, welfare, and protection for senior citizens. It requires children to provide maintenance for their parents and the government to provide old age homes and ensure medical care for senior citizens. It sets up administrative tribunals and appeal tribunals to ensure maintenance and also protection of senior citizen and their property. Many of the victims
keep asking us, where do we file this complaint? Surprisingly, most of the people in India are not aware about the Senior Citizen Act. And even if you go to any advocate asking for the help under Senior Citizen Act, most likely they will be reluctant to tell the fact that there is existence of this kind of act. You may be surprised why. You will get to know about this in couple of sites. Well, complaint under Senior Citizen Act to be filed under tribunals. In Indian judiciary, we need to follow certain hierarchy. We have lower courts, we have apex courts. And under lower courts, we have family courts, industrial court and labor court. And again, next we have district level courts, metropolitan level courts as well. Above that, we have High Court and Supreme Court. To be very specific about Senior Citizens Act, complaint under Senior Citizen Act to be filed before the tribunal courts, wherein the administrative body prescribed by the parliament will be heading this case for a speedy disposal of the case. Every district, every taluk will have this tribunals. In case if you do not find this kind of facility in your locality, please do consult Tahsildar, because above Tahsildar there will be a judicial officer who is popularly known as subdivisional magistrate, who will be acting as assistant commissioner, who is just below the rank of district commissioner of a district. So you can actually file a complaint there before the tribunal, and further it will be forwarded to the concerned authority for the trial. What is this tribunal? Is it a court? Why not? We are allowed to go file in a normal courts just the way we are filing matrimonial issues or civil matters or even criminal complaints. Well, senior citizens are old. They really don't have a patience to even stand in queue, wait for dates, because in Indian system, they linger the case for years and decades with no fruit results. Keeping this in mind, Parliament has come up with a tribunal wherein administrative tribunals were set up under the Administrative Tribunals Act 1985. It is also defined under the Indian Constitution, Article 322A. These tribunals will have all the judicial powers, same as judicial magistrate of first class as provided under CRPC 1973 section 2. The tribunal shall have all the powers of civil court for the purpose of taking evidence on oath and witnesses for all the purposes of section 195 of chapter 26 of CRPC. Section 7 of Senior Citizen Act gives provision for a victim to file a complaint before the subdivisional magistrate. In some of the cases, you may not find a subdivisional magistrate. In that case, you can actually file a complaint directly to district commissioner. Now, who can actually file the complaint? A senior citizen, including a parent. Many people have been asking, does mother come into this Senior Citizen Act? Because she is not a senior citizen. She could be of age around 50 to 55. Is she covered? Absolutely, yes, she is covered. It's not necessary that your parents need to be age of above 60. If they are your parents and if they are victims, they are entitled to file the complaint before the district magistrate. So any senior citizen, including parent who is unable to maintain himself from his own earnings or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5 of Senior Citizen Act.
So it is important to note that you have to file a complaint under Section 5 of Senior Citizen Act before the magistrate in order to take action according to the law. Now, parents or grandparents against one or more of his children not being a minor can be sued. A childless senior citizen against his relatives, he can sue the case. You may be thinking, why childless senior citizen? Say, assume I don't have a spouse. I neither have any brothers, no siblings. I have few property with me. I'm looking care of it. Now, I want to donate this to somebody with a condition that they will take good care of me. Such person or a childless senior citizen can still be entitled to file a complaint under Section 5 for the remedies available under the Act. If is incapable by any other person or organization authorized by him, say now I will give authority to maintain all my properties to XYZ person. He is no more a relative. He is not a relative, in fact. But still, under Senior Citizen Act, I can sue him, ask for the remedies available under the law. Now, say I have no property. I still need some relief from Senior Citizen Act. And say I am subjected to a tremendous elderly abuse scenarios, and my abuse was posted in social media. Looking into such report, tribunal himself can take a suo motu cognizance. Suo motu cognizance is something wherein you don't in person have to go to court and then give a complaint. Upon knowing the facts, suo motu cognizance can be taken by the tribunal itself. Nobody is required to go give a complaint. It's very important to note this, because there'll be a lot of senior citizens who will not be having any relatives or even friends. And in that case, you may always plead before the tribunal, say, to take suo motu cognizance and ask for the reliefs. And now you may be surprisingly thinking, what way tribunal may help them if they don't have anybody to look after? Well, I'll be addressing to this question in subsequent slides. Now, complaint against whom? A complaint under Senior Citizen Act can be, as I said, can be filed before the tribunal under Section 5. On whom we can initiate is defined under Section 2. Children. Who are all children who are covered under this act? Children under Senior Citizen Act includes son, daughter, daughter-in-law, grandson, and granddaughter, but does not include any minor. Section 2G defines relatives. Who are all relatives who are covered under this act? Well, any person it could be who is a legal heir of a childless senior citizen, who is not a minor and is in the possession or would inherit his property after his death. I would like to take one more minute to explain this legal heir and possession of the property. As I was telling earlier, say I'm the only child and I have nobody else. I have a property which will be taken over by some of my close relatives. I would probably voluntarily donate them, or through legal source, they'll be having a powers to take my property back. So anybody who is under the possession, say for example, now I give my car to somebody, or say I give it to my neighbors and say, you take care of me by taking this car. They are under the possession of my property. That person will become a bound responsible person to look after my livelihood. So it could be any person who actually owns the possession of your property will be responsible to take care of you.
The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to the need of such senior citizen to that senior citizen may lead a normal life. So any complications that may arise to lead a normal life for senior citizen, such obligations can be removed. All those powers has been given to the tribunal. Very importantly, the last point, any person being a relative of a senior citizen or having a sufficient means shall maintain such senior citizen, provided he is in the possession of the property of such citizen or he would inherit the property of such senior citizen. In so many cases, it so happens that soon after the marriage, parents will give their property to son and also to daughter-in-law. Clever daughter-in-laws, what they do, as per our experience that we have seen in MyNation, they convince husband to transfer all the property on her name. There are a number of cases like that. Actually, the property inherently self-acquired by senior citizen, which was transferred to son or to both son or daughter-in-law. Now, you may think, is daughter-in-law not entitled to maintain or look after senior citizen? Yes, even they are entitled. It's their bound responsibility to look after the senior citizen. Even in case if they're not looking after such senior citizen can still have provision to sue her under Senior Citizen Act. So we've been getting lot of queries related to Senior Citizen Act, saying that couple of judicial magistrates say that daughter-in-law is not covered. It is absolutely false. Any, not just daughter-in-law, even a relative, as I said earlier, can be sued under Senior Citizen Act. Senior Citizens Act actually provide welfare and also security to their property as well. Now, when we speak about property, what all types of properties are covered? It's really good to have all the properties definition covered under this Senior Citizen Act. This Senior Citizen Act property definition has been defined under section 2F, wherein it clearly says it could be any kind of property. It could be movable, immovable, ancestral, self-acquired, tangible or intangible, and includes rights or interests in such property. Couple of you guys may not be aware what is this intangible property or tangible property or interest in such property. Well, tangible property in law, literally anything which can be touched and includes both real property and personal property. It could be movable property like furniture, vehicles, cars, jewelries, etc., etc., etc. Whereas intangible property includes assets such as bank accounts, FDs, stocks, bonds, insurance policies, retirement benefits that they get out of their service, RDs, chit funds. So all this comes under tangible property. So any property which belongs to senior citizens, if they think they're not been able to actually enjoy their own property, in that case, they can actually sue under Senior Citizen Act. The most important aspect of this Senior Citizen Act, unlike no other acts in India, I strongly believe that this is the only act available in India so far which actually gives a right to legal representation. Well, in family courts, we have seen, even in family courts, actually, right to legal representation is barred. But yet, lawyers go seek permission from the court and then file the petition on behalf of the complainant or the respondent. But here it is strictly followed under Senior Citizen Tribunal that legal representations are not allowed.
Its section 17 clearly states, notwithstanding anything contained in any law, no party to a proceeding before a tribunal or appellate tribunal shall be represented by a legal petitioner. No advocates are allowed. Reason why? As we know, lawyers sometimes use their own delay tactics and they don't let case dispose of soon. One of the most important section under Senior Citizen Act is that any complaint filed before the tribunal, it is mandatory to close the case, dispose of the case within 90 days from the date it's filed in the court. And hence, in order to avoid delay tactics, advocates are generally not allowed. But there is something contradictory here. In most of the cases under Senior Citizen Act, the cases will be filed before the tribunal and next it will be appealed before the district magistrate or district commissioner. Then it will be moved to appellate court, high court or supreme court. Though Act clearly says there are no legal representations are allowed as per section 17, it's so contradictory to say that there are n number of cases which have been filed by the advocates in the high court and supreme court under Senior Citizen Act. We have been in touch with Ministry of Social Welfare Department when they ask us to provide our feedback in the amendment of Senior Citizen Act. We have actually asked them to consider all these points, but so far we haven't received any response from them. Anyways, let's see how the Amendment Act gonna come forward in subsequent years. Jurisdiction and procedure. What is this jurisdiction? In law, it says that case need to be filed at the place where offense has been occurred. Now, it may not happen in every situation that senior citizens have to travel all the way from where they are residing and the place where offense has occurred. Keeping this in mind, this act has a flexible jurisdiction which is defined under section 6. The proceedings under section 5 may be taken against any children or relative in any district. We discussed earlier under what section a complaint needs to be filed, right? So section 5 gives us a platform to file a case under Senior Citizen Act. Now section 6 defines where to file a case, which location to file a case. Say assume that your parents are in Bangalore. Offense occurred in Delhi. Because of the abuse, they shifted to Bangalore. It's not mandatory for them that they have to file a case in Delhi, but they can still file a case here in Bangalore itself. So where he resides or last resided, that place can be considered as the jurisdiction. Unlike in couple of other matrimonial issues or criminal cases, in case if jurisdiction is not been followed, there is a high possibility that the case may get quashed. So that complication you will not see here under Senior Citizen Act. And another jurisdiction can be used where children or relatives are residing. As per the convenience of senior citizen, they can actually file a case. Now, on the receipt of the application under section 5, the tribunal shall issues a process of procuring the presence of a children or relative against whom the application has been filed. This is the general procedure, protocol which has been followed in every court. The same way it is also followed in tribunals. So basically, the moment the complaint is filed before the tribunal, it should be accepted. And you may definitely ask me, will all my complaints be accepted by the tribunal? Yes, it is your fundamental right as defined under the Act. No subdivision magistrate or district magistrate can deny accepting your
complaint. It is an offense under the law, under the IPC. They can also be penalized in case if they don't follow their duty. So the moment their complaint is accepted, it's the responsibility of a tribunal to issue the notice to the respondents. It could be your children or relative or whosoever. Then, for the purpose of securing the attendance of a children or relative who are called before the tribunal, shall have all the powers of judicial magistrate of first class as provided under the Criminal Procedure Code. It may be sounding little technical to you. Well, to put it in a very simple terms, as per the procedure, the moment summon notice or summons are issued to a particular person, it is bound responsibility to come before the tribunal or a court and address his version of statement. So when they do so, tribunal should have all the powers to accept it, and that has been given under CPC. So tribunals will have all the powers to take the respondent statement and also oath and also witnesses to proceed with the trial. And Okay, Nagraj, we have some questions here. Can we take them from YouTube channel? please. Yeah. Um, yeah, wherever possible, if you can actually like reiterate the same thing in Hindi, it will actually help them. Like few of them has actually asked for Hindi translation. But yeah, we have one question from Sagar Mohanty. How senior citizens can file counter cases on daughter-in-law if they are discharged from false 498A or the case is proved false? Okay. See, I don't really understand. Most of the cases, by default, the time when the cases are actually filed before the 490 day, we see 490 day has been termed to be legal terrorism by the Honorable Supreme Court. N number of times Supreme Court and multiple times even High Courts have been telling, don't misuse the law, file a false complaint on anybody. But still, we have been seeing a rise in false complaints. Even though it is false, sometimes when we tell even to our own advocates, they don't suggest any counterblast cases. See, when there is any act, it is meant for the citizen of the country. Why can't you use that and file it, is my question. Who is stopping you to file? Now, to be very specific about Senior Citizen Act, it clearly says what type of abuse is accepted. We have read earlier, it could be emotional, it could be physical. Is emotional abuse not covered under the cruelty when it is proved to be false? What is stopping you from filing it then? I'm really sorry to tell this, but let me be very frank. Whenever any senior citizen goes to advocate asking help under Senior Citizen Act, they refuse to tell the facts involved in the Senior Citizen Act. I sense a reason. It is because under Senior Citizen Act, lawyers are not allowed. They are not accepting the cases and submitting before the court. They're not allowed, in fact. Now, when they're not allowed, why would they help you to fight your case? Unless until we give a case to him, you will not be paying. If you are not paying, why will he help you? This we have been hearing from lot of people, but definitely you have provision to invoke a couple of sections in Senior Citizen Act. You can definitely use it. It's not that you cannot use, but you have to see the facts also. Fine. And I understand यहाँ पे थोड़े लोग हैं उनको एक्चुअली हिंदी उतने इंग्लिश उतने ठीक से समझ में नहीं आता होगा. माय हिंदी इज मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन भी मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरे साथ हो मैं हिंदी में भी बोलने के लिए कोशिश करूंगा. अब तक जो भी मैंने कवर किया हूं, अगर तुमको स्पेसिफिक में कुछ
सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए तो यू कैन पोस्ट देयर। मेरे साथ जो है विक्रम एंड अदर्स जरूर मुझे वो लोग बोलेंगे कि इसके बारे में हिंदी में बोलने के लिए मैं जरूर आपके क्वेरीज को एड्रेस करूंगा। अब तक फिलहाल जो भी टॉपिक मैंने कवर किया हूं, अगर आपको डाउट है तो जरूर आप पोस्ट कीजिएगा और मैं हिंदी में बोलने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। Thanks, All- Nagraj. Yeah, you can further Yeah. continue. I have two questions. Yeah. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज कि रिलेटिव है जो सीनियर सिटीजन का, वो उसको इंटिमिडेट कर रहा है, मतलब धमकी दे रहा है करके, कुछ कर रहा है करके, तो इस केस में सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कुछ प्रोटेक्शन ऑर्डर या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ऑब्टेन किया जा सकता है? जरूर कर सकते हैं। सी ओके। मैं पिछले सेट्स में बता चुका हूं कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट किन किन को अप्लाई होता है। जो भी हो, वो सीनियर सिटीजन ना भी हो, अगर माँ पापा, सोचो कि हमारे माँ पापा हैं, दे आर नॉट अबो 60, वो 60 से भी कम उम्र के हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो बिकॉज दे आर नॉट अबो 60 वो सीनियर सिटीजन के फायदा नहीं उठा सकते। दे कैन डेफिनेटली, अगर वो लोग किसी अब्यूज पे सफर हो रहे हैं, कि सोचो कि बहू उसको गाली दे रही है या धमकी दे रही है, थ्रेट कर रही है कि मैं झूठे केस लगवा दूंगी, लाभ लाभ लाभ, ये बहुत सुनते रहता है। ऐसे पक्ष में आप जरूर जाके इस इस सेक्शन को, आई मीन सीनियर सिटीजन एक्ट के फायदे उठा सकते हैं, जाके रिपोर्ट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, कि ऐसे हमको धमकी मिल रहा है, हमको पीस नहीं मिल रहा है, हमको इमोशनल अब्यूज हो रहा है, वी आर हैविंग नाइटमेयर्स एवरी डे, वी आर नॉट एबल टू लिव द लाइफ, नॉर्मल लाइफ, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थ्रेट्स। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये हमारे एक्ट में कवर नहीं हुआ है, हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा सिचुएशन है, कोई फेस कर रहे हैं, तो आप जरूर जा सकते हैं कोर्ट पे, रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी आपका ये फंडामेंटल राइट है। एक्ट जब बनता है, सभी को, संविधान में सभी को राइट्स दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं डाल सकते हैं, पक्का आप इसको यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। थैंक यू। द अनदर क्वेश्चन इज कि सपोज कि एक पर्सन का जो इनकम है वो 20,000 है और कोर्ट उसकी जो आपका वॉइस कट गया यार। Yeah, Nagraj, we might have lost Vikas. He will rejoin. Meanwhile, we have one Yes. question from YouTube. सॉरी अगेन, Yes. सॉरी। सो कोर्ट अगर उसको 15,000, उसको 20,000 15,000 उसको मेंटेनेंस दे देता है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन भी उस पे वाइफ पे फिर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड का इनकम तो उतना रहा नहीं कि वो अपने माँ बाप का टेक केयर कर सके, तो ऐसा कर सकते हैं? सी इसने इस मेंटेनेंस के रिलेटेड मैंने अपने खुद केस में आई हैड आस्क्ड बिफोर द कोर्ट। ये मुझे लॉजिक अब तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोर्ट कहता है 25 to 30% ऑफ द इनकम ऑफ अ हस्बैंड नीड टू शेयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। एक एक पार्ट। दूसरा पार्ट है, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर भी यही कहता है कि 25 to 30% सीनियर सिटीजन को भी देना है, क्योंकि उनको भी जीना है। 100% में 30% वाइफ को जा रहा है, 30% माँ पापा को जा रहा है। बचा कितना यार मेरे लिए? दिस इज सो फनी एंड एट courts are so casual in passing the order. ओके। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है ना, यही है कि अब अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर, नो डाउट यू कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम दी चिल्ड्रन, ये सन हो सकता है या फिर डॉटर इन लॉ हो सकता है, ठीक है। ओके। ये सेम मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू फाइल अंडर सीआरपीसी 125। यस। सोचो कि अभी डॉटर इन लॉ फाइल करती है 125 में, senior citizen can file a case under senior citizen act asking for the maintenance again. Yes. So you have to let honorable court know that this is what is happening. And ऐसा नहीं है कि बहू डालती है तो यहाँ माँ पापा नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है। burden, all the burden is on husband. क्वेश्चन मेरा है कि वाइफ, उसको जो पेरेंट्स हैं वो वाइफ पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? मतलब डाल सकते हैं? It is subjective. Subjective as in क्या? सोचो कि अभी husband का he is not earning, okay, wife is earning, husband is not earning, or he is bedridden. Liabilities depends on
wife. It's her responsibility to look after spouse or in-laws. अगर सोचो कि तुम मेंटेनेंस कोड पास करता है 50,000, सोचो, ठीक है, तुम्हारा ओके, यू सेड योर सैलरी इज 30,000, राइट, एंड 50,000 ऑर्डर पास कर रहा है, it will be responsibility of even your wife to pay that maintenance to your parents. ऐसा नहीं हो सकता it is all responsibility is on son. ऐसा नहीं है, even it will be her responsibility to pay maintenance to senior citizen. Am I clear? Okay, thank you. Any other question? हाँ नागराज, और दो क्वेश्चन है. Yeah. One is from our own member Sri Ram. Mm-hmm. Can I file a case in the Senior Citizens Act on behalf of my mother that her daughter-in-law is not allowing her to meet her grandson? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है because most of the people are having this concern. Most of the times what happens is the moment the cases are actually filed, ये लोग like फादर को विजिटेशन देने में ही बहुत तकलीफ करते हैं और विजिटेशन टू ग्रैंड पेरेंट्स इज नियर टू इम्पॉसिबल. तो इसमें सीनियर सिटीजन्स एक्ट का कुछ फायदा हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है. अभी इट इज नॉट नेसेसरी कि हस्बैंड को ही सीनियर सिटीजन एक्ट के जरिए जाने का है. मदर she herself will file a petition under Senior Citizen Act, or see, as we discussed already, it is not necessary कि senior citizen की उनको ही जाकर केस फाइल करना है. Anybody they can represent case on behalf of them. लेकिन क्या होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्टिकुलर केस, विच एवर यू आर टेलिंग नाउ, कि ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तंग करते हैं, सही है ना. सो इन केसेस में अगर हस्बैंड फाइल करता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ काउंटर ब्लास्ट केस. कोर्ट यही माना जाता है, हमारे इंडियन जुडिशियरी में ही माना जाता है कि हूएवर गोस टू कोर्ट फर्स्ट ही इज द रियल विक्टिम. अगर हम लोग उसके बाद में जाके कोर्ट में बोलेंगे तो लोग सोचेंगे काउंटर ब्लास्ट केस है. There are n number of judgments that we see in High Court and Supreme Court. बोला जाता है तुम उसके बाद केस कियो तो ये काउंटर ब्लास्ट केस है और क्वाश किया जाता है. बट ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम इट हैपेंस. फैक्ट्स है तुम्हारे, तुमने जो एलॉबरेटली कहा कि ऐसा तकलीफें होता है, दे डोंट लेट एनी ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रंस टू फॉर द विजिटेशन पर्पस. डेफिनेटली इट सी इट कुड बी एनीथिंग यार. Anything which is causing discomfort or suffocating to senior citizens, they can actually use this act to get relief from this act. Definitely they can do it. And in case if they see, the problem here in India is that first of all, because we are not from legal background, we hesitate to follow our own ideas. We directly go to advocates. And how sure are you that advocate will suggest you in a proper way? जो हमारे साथ में 2-3 साल तक जीकर वाइफ खुद झूठा केस डालती है, we are broken here. We have lost trust. When we have lost trust in our own wife, how confident are you that whatever your advocate says is right? Why do you follow him? When there is a provision, you see if there is a scope for you to file a case. Why can't you file? Thing is, people are not coming forward to file. That is the main problem here. You are afraid what will happen. What will happen? You're not calling some act which is not there in the document, right? This document is public. सबको हक है उसको यूज करना. अगर रॉय एडवोकेट नहीं मान रहा है तो तुम खुद डालो. इमोशनल अब्यूज का क्या मतलब क्या है फिर? When daughter in law is not allowing kids to give a visitation to grandparents, is it not emotional abuse? Is it not? You can definitely file. Yeah, thanks Nagraj. We have few more questions but we'll take after this slide. Yeah. So we were discussing about the jurisdiction and procedure. I hope अभी तो तुमको पता चली होगा कि कहाँ आप केस को फाइल कर सकते हैं और प्रोसेस के बारे में भी. सो अगर सोचो कि विलफुली जानबूझकर अपना बेटा हो सकता है या फिर बहू हो सकती है, कोर्ट को अपीयर नहीं होती है. शी मे नॉट अपीयर. In that case, tribunal will have all the powers
टू पास द एक्स पार्टी ऑर्डर। शायद आपको पता नहीं होगा कि क्या ये एक्स पार्टी ऑर्डर है। एक्स पार्टी ऑर्डर जो है, सी कोर्ट, you it can be a court or a tribunal, they have to follow certain protocol, जो भी प्रोसीजर है उनको फॉलो करना ही पड़ता है। मैं जाकर सोचो कि सीनियर सिटीजन जाकर ट्रिब्यूनल में कुछ कंप्लेंट किए हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ भी सीनियर सिटीजन बोल रहा है वो सच है। अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो कोर्ट विल सी, तो उनको ऑपोजिट पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए, देता भी है। अगर सोचो कि कोर्ट से समन्स जाता है, नोटिस जाता है, उन लोग रिसीव भी कर लेते हैं लेकिन वो लोग नहीं आते, ऐसा होता है, तो कोर्ट क्या करना चाहिए? ऐसे उनको छोड़ दें? तो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस कोर्ट विल पास द एक्स पार्टी ऑर्डर। जो कुछ भी सीनियर सिटीजन कंप्लेंट में लिखा होता है उसको सही माना जाता है और उनके फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर पास हुआ जाता है। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर पास होने के बाद जो कुछ भी ऑर्डर में पास हुआ जाता है उसको मैंडेटरीली ऑपोजिट पार्टी को फॉलो करना ही पड़ता है। देयर इज नो वे टू एस्केप। अगर वो नहीं होता है, सीनियर सिटीजन एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो इंप्रिजनमेंट तक भी जा सकता है, जब्ती भी कर सकते हैं। कोर्ट हैव ऑल द पावर्स टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी, सेल इट, रिकवर इट एंड देन गिव रिलीफ टू सीनियर सिटीजन्स। ये होता है। सो अगेन, where children or relative is residing, as I was already telling, कि जहां भी relatives reside कर रहे हैं और फिर relatives जहां पे हैं वहां पे भी initiate कर सकते हैं। और सोचो कि in sometimes, in some of the cases, relatives may not be here in India or children may not be here in India. Even such a situation, summons shall be served to the tribunal through a source of channel. ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी को जाएगा, वहां से इट विल बी सर्व टू द कंसर्न कंट्री। ऐसा नहीं है कि बेटा या बहू यहां पे नहीं है तो केस कैसा फाइल कर सकता है, ऐसा नहीं है। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फाइल द केस इवन इन केस इफ योर चिल्ड्रन और रिलेटिव्स आर आउटसाइड द कंट्री। सो once the opposite party comes to court and give their version of submission, tribunal, before hearing an application, he will accept the complaint, as I said earlier under section 5, and then refer it to a conciliation center. एक कंसलेशन सेंटर तो आपको बहुत ही जान पहचान वाला होगा, क्योंकि एक कंसलेशन सेंटर जो है हर एक कोर्ट में होता है। इट कुड बी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स और इवन क्रिमिनल कोर्ट्स, हर एक जगह में होता है। बिकॉज कोर्ट एक्चुअली नहीं चाहता है कि हम लोग इस झंझट में फंसे और लड़े सालों तक। सो बेसिकली दे गिव अस प्रोविजन और अ प्लेटफॉर्म टू सेटल थिंग्स अमिकेबली। तो दोनों पार्टीज को बुलाता है इस कंसलेशन सेंटर और उनको समझा के बोला जाता है कि अगर यार कॉम्प्रोमाइज करना है तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, इस झंझट में मत फंसो। इफ देयर इज एनी सच स्कोप, it can be resolved under conciliation center. There'll be a dedicated officer for it जो सेटलमेंट पे हेल्प करेगा, सेटलमेंट भी किया जा सकता है। अगर सोचो कि सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल टू द ट्रिब्यूनल? अभी प्रोसेसर के हिसाब में तो उनको आगे जाना ही पड़ेगा। सो ऑल द एविडेंसेस इट विल बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन फॉरवर्ड। सो अभी ये ऑर्डर कैसा फाइनल किया जाएगा? इट इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। सो फैक्ट्स के अनुसार ऑर्डर पास किया जाएगा। अगेन इट इज वेरी मच सब्जेक्टिव कि कैसे ऑर्डर पास किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हम लोग देखे हैं कि क्योंकि इस कानून के बारे में, दिस एक्ट के बारे में, नॉट एवरी पर्सन इज वेरी वेल अवेयर एंड हैविंग गुड नॉलेज अबाउट इट। This act gives us a wonderful sections which clearly says जो भी complication आए during the proceedings of the case, जो भी complication हो उसको हटाने का powers इस section में दिया हुआ है। That we will be discussing later point in time.
सो इन केस सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल सीनियर सिटीजन के फेवर में ऑर्डर पास नहीं करता है, यू डोंट हैव टू लूज होप्स, आप डेफिनेटली उसको अपील कर सकते हैं ऑर्डर के बेसिस पे डीसी कमिश्नर, वहां पे जाकर आप अपील कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट एंड फॉलोड बाय डीसी. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्ट clearly describes ki is complaint which has been accepted under section 5 of Senior Citizen Act has to be mandatorily disposed of in 90 days of time. 90 days से ज्यादा इस सीनियर सिटीजन कंप्लेंट को कोई रोकना नहीं चाहिए. मैक्स टू मैक्स 90 डेज के अंदर इस केस को क्लोज करना चाहिए. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस, especially when it comes to senior citizen case property related matter. बहुत सारे लोग, because they are not aware of this act, they blindly go file a suit in civil courts. Please don't do that. मैं दोबारा बता रहा हूं, जो भी सीनियर सिटीजन आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज आप सिविल सूट फाइल करने से पहले सीनियर सिटीजन एक्ट को इन्वोक करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि सिविल सूट में सीनियर सिटीजन के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं और सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर सारे के सारे सिविल प्रोसीजर के पावर्स हैं. उसकी वजह से आपका जो भी सिविल सूट में आप फाइल करते हैं, सोचो कि आप प्रॉपर्टी एविक्शन के ऑर्डर लेना है, जनरली एवरी एडवोकेट विल फाइल अ केस, will file an injunction suit before the civil court. Not required. सिविल सूट eviction के लिए आपको सिविल कोर्ट पे जाकर फाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सालों सालों लगेगा. सेम थिंग, सेम रिलीफ, जो कुछ भी रिलीफ आप सिविल कोर्ट में पा सकते हैं, सारे के सारे रिलीफ सीनियर सिटीजन के एक्ट में भी पा सकते हैं. जब ये 3 महीने में डिस्पोज होने वाला है, बिना विदाउट एनी एडवोकेट, आपको सिविल सूट पे क्यों जाना है? I've seen lot of cases I've seen wherein parents file injunction suit, eviction suit, property disputes में सारे के सारे सिविल कोर्ट पे जाते हैं और वहां पे फाइल करते हैं. Not required. You can actually use this Senior Citizen Act to file a case. So maintenance. Section 9 of Senior Citizen Act gives provision to senior citizen tribunals to order for the maintenance. If children or relative, as the case may be, neglect or refuse to maintain a senior citizen being able to maintain himself, the tribunal, on being satisfied of such neglect or refusal, देखो यहाँ पे दिया हुआ है being satisfied of such neglect or refusal. इसका मतलब है कि कोर्ट देखेगा कि फैक्ट जो है वो सच है कि नहीं है. जो कंप्लेंट जो भी फाइल करते हैं वो फैक्ट्स देख के ऑर्डर पास करता है. सोचे कि अगर बेटा और बहू सच में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इमोशनल नेग्लेक्ट दे रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, उनको लाइवलीहुड को देखभाल करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली सीनियर सिटीजंस कैन इन्वोक सीनियर सिटीजन एक्ट एंड आस्क फॉर द मेंटेनेंस. चिल्ड्रन हो सकता है, चिल्ड्रन का डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, उस पर डॉटर इन लॉ भी आती है, सन भी आता है, उसके बाद रिलेटिव्स के डेफिनेशन में देखे. सो ऑल दोस विल बी कवर्ड एंड मेंटेनेंस विल बी ऑर्डर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. So again, section 10 gives provision for the alteration of the maintenance. अगर सोचो कि maintenance sufficient नहीं हो रहा है senior citizen को, क्योंकि as we all know, senior citizens usually be suffering from old age ailments. They'll be spending a lot of money for their medical purposes. So as I see, more than 10,000 they simply spend on medicines itself. So in that case, you can definitely ask for the alteration in the maintenance order passed under this act. So I was telling you earlier also कि अगर सोचो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है और पार्टी आ ही नहीं रहा है, तो हाउ कैन दैट बी एनफोर्स्ड? ऑर्डर जो पास तो हुआ है, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन लेवल तक तो आना चाहिए ना, तो उसको कैसा किया जा सकता है? सो एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पावर्स हमको सेक्शन 11 पे दिखाई जाता है. A copy of the order of the maintenance, including the order
regarding the expense of the proceedings, including the order regarding expenses of the proceedings. Expenses of the proceedings के मतलब आपको पता ही होगा अब तक कि सोचो कि सीनियर सिटीजन तो they actually need money for their own livelihood. Where will they get money to invest money for legal battle? So proceedings के लिए जो भी चाहिए, could be travel, it could be filing के लिए जितना भी हो सकता है खर्चा, सारे के सारों एक्सपेंसेस इस पे कवर किया जा सकता है, ले भी सकता है. सेक्शन 16 हम लोग पिछले सेट में भी डिस्कस किए हैं. अपील कैसे किया जा सकता है? एनी सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट, as the case may be, aggrieved by an order of the tribunal may within 60 days from the date of order prefer an appeal to the appellate tribunal. तो अगर सोचो कि सीनियर सिटीजन इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, जो ऑर्डर पास किया है उनको लगता है सीनियर सिटीजन को कि ये उनके फेवर में नहीं है, तो डेफिनेटली 60 डेज के अंदर, ऑर्डर पास होने के बाद 60 डेज के अंदर वो अपील भी कर सकते हैं नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट पर. इट कुड बी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और हाई कोर्ट. Under section 19 there is establishment of old age homes. The state government may establish and maintain such number of old age homes at accessible places as it may deem necessary, in a phased manner, beginning with at least one in each district to accommodate in such homes a minimum of 150 senior citizens who are indigent. This is really sad कि हमारे इंडिया में ऐसे सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं वेर इन ओल्ड एज होम्स की जरूरत पड़ रहा है. ऐसे तो एक्ट में मेंशन हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेना है एस्टैब्लिश करने के लिए. आज तक मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने एक भी ऐसे होम, ओल्ड एज होम को देखा भी नहीं हूं स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर सिटीजन के अंदर एस्टैब्लिश किया हुआ वाला है. सो इट इज वेरी सैड, but anyways, no other go. So whoever senior citizen who is actually not able to maintain himself and suffering a lot of old age ailments can ask state government to help them to go to old age homes. Again, under this act, section 20 provide option for medical support for senior citizens. So again, this is responsibility of a state government to set up hospitals and give sufficient funds for the welfare of senior citizen and to fulfill their basic needs. Hospitality जो भी है सारे के सारे state government की जिम्मेदारी है. And definitely we can seek help from the state government under this provision of section 20 in case if any senior citizen help चाहिए medically, if they are not able to take care of themselves or very poor, they don't have any provision, कि ऐसे helpless conditions पे definitely they can seek help. It is government's responsibility and they should be taken care under this particular section. This is one of the most important highlight of Senior Citizen Act. I have been seeing n number of queries and questions on this particular topic, life and property of Senior Citizen Act. Section 21 of Senior Citizen Act says that the state government shall prescribe a comprehensive action plan for providing protection of life and property of Senior Citizen Act. See, we should actually be feeling so proud. एक गर्व होना चाहिए हम लोग को कि हमारे एक्ट में ऐसे कुछ लिखे हैं. तो ठीक है, डॉक्यूमेंट में तो है, लेकिन कितना इंप्लीमेंटेशन लेवल पे है. इट्स रियली सैड. जो कुछ भी एक्ट में है, आई थिंक हार्डली 5% मे बी इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड. क्योंकि पिछले स्लाइड में मैं बता रहा था कि I openly challenge the state government. We can even file RTA and ask if any state government in India
has ever tried giving protection under section 18 or 19, maybe old age home हो सकता है या फिर मेडिकल हेल्प हो सकता है, कभी किए कोई स्टेट के ट्रिब्यूनल्स ने? यहां पे सेक्शन 21 यही कहता है कि कंप्रहेंसिव एक्शन प्लान को फॉर्म करना है. उस प्लान ये बताना चाहिए कि सीनियर सिटीजन के लाइफ और उनके प्रॉपर्टी कैसे बचा सके. जो एक्ट में वही नहीं करते हैं ये लोग कब फॉर्मुलेट करेंगे इस एक्शन प्लान को और इंप्लीमेंट करेंगे? सेक्शन में तो है, लेकिन अब तक तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैजिक तो हुआ नहीं है हमारे देश में. एनीवेज, द स्टेट गवर्नमेंट में confer such powers and impose such duties on a district magistrate as the case may be, and to ensure that the provisions of this act are properly carried out, and the district magistrate may specify the officer subordinate to him who shall exercise all the powers under this act. So आप सोच सकते हैं कि इस एक्ट पे मैं किसको जाकर फाइल करूं, क्या पूछूं? Any help that senior citizen wants, he can directly approach district magistrate and ask for the remedy. And it's his responsibility to exercise the powers under Senior Citizen Act and ensure that he gives protection of their life and also help them to protect their property. Most important section of Senior Citizen Act, section 23, eviction or revoke of a property. आज तक जितने भी हाई कोर्ट के जजमेंट्स हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो सकते हैं, और majority of the cases it will be related to this. 99% of the cases will be related to this. In general, usually what happens, bahu, she comes and stays with the in-laws. She keeps subjecting them to a emotional abuse or kuch na to kuch taunt, physical abuse also. We have seen the video in the beginning of this session, how a daughter-in-law was abusing a senior citizen. अभी यहां पे ऐसे सीनियर सिटीजन है जो सफर हो रहे हैं सालों से. बहू बोलती है, I will not vacate the house, it's my house. We have seen a number of cases. And see the contradictory here. Under Domestic Violence Act, even though it is a false case, from Domestic Violence Act, she can get the order from the magistrate court asking for the residence order. झूठा केस डालेगी, बोलेगी कि मेरे इन-लॉज ने मार पीट के घर से भगा चुके हैं, हस्बैंड मार के भगा चुके हैं, they kicked me out of the house. Even though according to her, if it is a fact, she wants to come and say. यहां पे बोलती है कि मारपीट करते हैं, लेकिन भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बोलती है कि मुझे घर जाना है. ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं. She'll come to our house. But what about the other side of the coin, wherein in-laws are getting harassed, in-laws are getting abused by such wicked wives or daughter-in-law? See, this particular section 23 gives provision under Senior Citizen Act for a transfer of a property to be made void in certain circumstances. I'll read out the entire phrase. Where any senior citizen who, after the commencement of this act, has transferred the way of gift or otherwise his property. I'll try to explain this in pieces. It clearly says that senior citizen after the commencement of this act means a act pass होने के बाद 2007 के बाद जो भी सीनियर सिटीजन है उनके प्रॉपर्टी गिफ्ट के जरिए इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज. I am specifying a word called otherwise. What is this otherwise? What does it mean? Way of gift or otherwise.
सोचो कि माँ पापा, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो गिफ्ट बोलते नहीं है कि ये गिफ्ट है, दे सिंपली ट्रांसफर इट टू देयर किड्स और इन लॉस, टू डॉटर इन लॉ। ऐसा होता है। दे विल नो, दे नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट विच सेज कि वो गिफ्ट है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर देखो, दिस चुमा दे गिव इट, ओके, यू से कि अभी कार हो सकता है फॉर एग्जांपल, कि गिफ्ट तो नहीं है, दे सिंपली दे गिव इट, यू टेक इट लाइक दिस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी, यू टेक इट एंड यूज इट। सो अदरवाइज का मतलब है, डेफिनेशन इट इज वेरी वाइड। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, मैं डोनेट भी किया हो सकता हूं, ट्रांसफर भी किया हो सकता हूं, या फिर आई वुड हैव इवन जस्ट चुमा गिवन जस्ट लाइक दैट, जो हम लोग भिखारी को देते हैं ऐसे भी दिया हो सकता है। इवन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट दैट ट्रांसफरी, जो भी वो लेता है, कंडीशन पे कि मुझे प्रॉपर्टी दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें अच्छा देखभाल करूंगा, आई विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू, यू गिव मी दैट प्रॉपर्टी, एंड विद बिलीव दैट such a person who will be under the possession of such a property, they will transfer it. वही बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांसफर शेल प्रोवाइड द बेसिक एनिमिटीज एंड बेसिक फिजिकल नीड्स टू द ट्रांसफरर। यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है? सीनियर सिटीजन है। ट्रांसफरी जो है वो लेता है, ट्रांसफरर तो ट्रांसफर कर रहा है, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी दे रहा है, लेकिन विथ ए कंडीशन कि मैं ये पैसा दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, विथ ए कंडीशन दैट यू विल टेक केयर ऑफ मी, you will look after my well-being, you will take care of my basic amenities, basic physical needs. उसके बावजूद भी अगर सच ट्रांसफरी, बेटा हो या फिर बहू हो, fails to provide such amenities or physical needs, that said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud and coercion under the undue influence, and such property will be made null and void by the tribunal. It is very, very, very important to understand the highlight of this particular act itself is this section. So अगर condition, see, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे cases भी हैं, not every parents will tell their kids or daughter-in-law impose a condition कि मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं या दे रहे हैं, आप हम लोगों को अच्छा तरह से ट्रीट करो, देखो, आई मीन लुक आफ्टर अस वेल बीइंग, ऐसे कोई कंडीशन इंपोज तो नहीं करता है, बट इट इज अंडरस्टूड अगर कंडीशन भी इंपोज नहीं हुआ है, बट इफ दे हैव एनी पोजीशन ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड इफ दे फेल टू लुक आफ्टर टेकिंग योर प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। n number of questions have been asked to me earlier also कि घर में फादर का या फिर पेरेंट्स का यूजुअली घर होता है, बेटा वहीं पे होता है, बहू वहीं पे होते हैं, डिस्प्यूट होता है, she says it is my house, I'll stay here only, and she will come to house under the residence order under the domestic violence act. no, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स सफर होते रहे उनके हरासमेंट को फेस करते करते करते, they can definitely use this section to kick them out of the house when they subject them to any sort of physical or mental abuse. Though she has an order, it is a property of senior citizen and they have absolute rights to stay peacefully and lead a normal life. There are n number of judges related to this. I'll be more happy to share the judgments also. You can personally contact us if you need any help related to Senior Citizen Act, especially related to eviction. Eviction and revocation both are covered under this section. So just because this definition says कि property transfer ही होना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे एविक्शन भी करवा सकते हैं अगर वो तुम्हारे प्रॉपर्टी पे आकर तुमको खुद को तकलीफ कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क देम टू our tribunal to kick them out of the house. That is your fundamental right. You can definitely ask for it. So
questions related to this because it's one of the very important section, and most of the guys keep asking me very often about this particular section. So if you have any doubts, you may please ask Yes, me. I have one question. Yeah. सपोज कि जो रिलेटिव है, मतलब जो सीनियर सिटीजन का रिलेटिव है, वो प्रॉपर्टी पे अपना हाथ जताने आता है, मतलब एक सिविल सूट फाइल करता है, ठीक है, किसके उस प्रॉपर्टी केस, हाँ, सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टीज पे ओके एक सूट फाइल करता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरे को हिस्सा दिया जाए करके, ऐसा करके, तो उस केस में वो क्या, वो मतलब क्या रेमेडीज अपना सकता है इस एक्ट के तहत? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव को पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज पे हक ही नहीं होता है. They're not Okay. entitled to file a suit. First of all, who are they? ओके, मींस अगर सिविल सूट ऑलरेडी फाइल्ड है तो उस केस में क्या करना है? मतलब ऑलरेडी सिविल सूट तो फाइल हो चुका है कोर्ट में. सिविल सूट पे अगर फाइल हो चुका है, प्रोविजंस देखना पड़ेगा कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या है और क्यों वहां पे सिविल सूट पे उनके पे डाले हुए हैं. अगर ऐसे भी डाले हैं तो डेफिनेटली सीनियर सिटीजंस कैन फाइल ए सूट हियर अंडर सीनियर सिटीजन एक्ट. ऐसा नहीं है कि वो सिविल सूट में केस डाल चुके हैं इसलिए आप यहाँ पे आके रिलीफ नहीं ले सकते. ऐसा नहीं है. Okay. When daughter-in-law is taking benefit of multiple maintenance from different sections, यहाँ पे बहू डालती है सेक्शन 125 में मेंटेनेंस मांगती है. रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस के जरिए इमोशनल अब्यूज के लिए रिलीफ मांगती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे. अगेन मेंटेनेंस यू कैन सीक अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24-25. इतने सारे एक्शंस सेक्शंस पे वो लोग, जब वो लोग ले सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? Okay. Definitely, it is immaterial. It is immaterial who have filed the case. See, सोचो ऐसे भी होता है कि सीनियर सिटीजन को तंग करना है, मुझे सीनियर सिटीजन को तंग करना है, इंटेंसिव जाके फाइल कर सकता है ना, रिलेटिव भी कर सकता है ना. तंग करना है तो जरूर कर सकते हैं ना. अगर सीनियर सिटीजन, सी, अंडरस्टैंड द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस एक्ट. द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग आउट दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड सेफ्टी, वेलफेयर. वेलफेयर के मतलब क्या है? अगर यहाँ पे सिविल सूट पे, अगर सोचो कि ट्रिब्यूनल कोर्ट कहता है जाओ तुम सिविल सूट में जाके लड़ो, ये एक्ट क्यों चाहिए हमें फिर? ठीक है, हम सिविल सूट में लड़ लेंगे, मर ले, वहीं पे मरेंगे हम लोग. Okay. Not necessarily that. See, when you know the act properly, you have to, it's your rights to ask. You can definitely seek. I said nowhere in the law says ki just because somebody has filed a suit in the civil code, it doesn't mean that you cannot file a case here in Senior Citizen Act. Who says? कहीं कोर्ट पे कहीं कहाँ है कोर्ट में कि तुम मेंटेनेंस 125 में ले रही हो, इसे डोमेस्टिक वायलेंस में तुम नहीं करना है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्लियरली सेज, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन इंडिया क्लियरली सेज, irrespective of you have filed a maintenance case under 125, you still be entitled to get maintenance under DV Act also. है ना उसमें? Yes. क्या उनको Okay, है? यहाँ पे भी डाल सकते हो, वहां पे भी डाल सकते हैं. हम लोग नहीं डाल सकते हैं क्या यहाँ पे? Okay, thank you. So another question I have कि suppose कि जब डिवोर्स हो जाए हस्बैंड वाइफ के बीच और वाइफ को काफी बड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा या बड़ा अमाउंट लेके एलमनी में चली जाए, और अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो इस केस में फिर सीनियर सिटीजन जो हैं वो एक्स वाइफ पे भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं? एक्स वाइफ किससे मेंटेनेंस मांग सकती है? मतलब सीनियर सिटीजन एक्स वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकते हैं? डेफिनेटली. डिवोर्स होने के बाद तो नहीं होगा. डिवोर्स होने के बाद नहीं होगा. एज लॉन्ग एज डिवोर्स, इवन एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स पे भी ले सकते हैं, लेकिन डिवोर्स होने के बाद तो नहीं. बिकॉज डिवोर्स का मतलब क्या है? यू आर नो मोर, दैट मैरिज इटसेल्फ इज नो मोर वैलिड. नो, जैसे कि 125 में है कि मैरिज के बाद भी वाइफ मेंटेनेंस केस कर सकती है हस्बैंड पे, या फिर उसके रिलेटिव पे कर सकते हैं कि हस्बैंड अवेलेबल नहीं है, मतलब हस्बैंड अगर मर गया है तो सिमिलरली प्रोविजन इसमें भी होना चाहिए कि जब अगर हस्बैंड नहीं रहा तो एटलीस्ट जो वाइफ उतना पैसा लेके गई है, जो प्रॉपर्टी लेके गई है एज एलमनी करके, तो उस पर भी केस होना चाहिए कि वो मेंटेन करे सीनियर सिटीजन को. एलिमनी तो तुमने दिया ना, हस्बैंड ने दिया ना, पेरेंट्स थोड़ी दिए. पेरेंट्स तो कभी एलिमनी पास ही नहीं करता है कि पेरेंट्स के इनकम के बेसिस पे. दे पास द ऑर्डर बेस्ड ऑन द हस्बैंड्स इनकम, नॉट बेस्ड ऑन द पेरेंट्स इनकम. सो दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट दैट वे एज लॉन्ग एज देयर इज डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैपनिंग. वो उसके बाद तो नहीं ले सकते. Okay, thank you. Are only applied to women only. It's not for men to follow. Sorry to interrupt.
Yeah, that's right. Nagaraj. Yeah. When parents are filing any case because the daughter-in-law is harassing, when there is a DV or 490 is pending under Senior Citizenship Act also, they will say you are counterblasting. Correct. Okay, because she filed, that's why you are filing here. Correct. But when same thing happens, they filed something and she filed 498 and DV. That they will take. Yes. Even there is a senior citizen case parents reported earlier, still she can file DV and 498 on them. Yes. That is not a counterblast as per our legal system. True. But It's very same thing if when parents are going to report, they are saying no, there is a case pending against you, you cannot file. You are filing counter for because she filed. correct. So it's all laws only to men and for his parents. But women, no, that is the bias. That is the stepmother policy of our legal system. And judges also totally biased. They will not listen to parents also. Even the parents, old parents are not able to walk also. She can file case on them that they are beating me. Okay, they are not able to walk properly, stand properly. How they can beat a young able-bodied woman? But that case is taken. If she file, whatever she says is right. That is the gospel truth, because she is Ablanari, she is a victim, and these old parents are not victim because they have a son. Just because they have a son, these laws are not applied to them. They are not women as per our legal system, and most of the senior citizen laws also will not apply when they goes to the court. Please continue. Yeah, It's Nagaraj, we have some. Yeah. Yeah, we have some questions from YouTube, so can we take them now? Yeah, please. Okay, if both husband and wife is earning equally well, can parents of son demand maintenance from both son and daughter-in-law? Of course they can. Okay. So jointly, see, at the end, it's a bound responsibility of both son and daughter-in-law to look after the parents. Nowhere in the act says that it is only responsibility of a son. When husband is looking after wife, when in-laws are looking after the wife, ऐसा थोड़ी है कहीं पे लॉ में कि वाइफ इन-लॉज के प्रॉपर्टीज जो है, लड़के के माँ पापा के जो प्रॉपर्टीज है, कहीं लॉ में बताता है कि बहू को नहीं जाना चाहिए? कहीं नहीं कहता है ना. When she is entitled to take the property, अगर सोचो पिछले क्वेरी किसी ने पूछा था कि what in case if husband dies, ऐसा हो सकता है, तो सीनियर सिटीजन के प्रॉपर्टी किसको जाएगा? बहू को जाएगा, बिकॉज शी इज कवर्ड अंडर लीगल हेयर, शी इज ट्रीटेड टू बी ए लीगल हेयर. सो जब लीगल हेयर जो वो बनती है, प्रॉपर्टी लेने के लिए वो तैयार रहती है, मेंटेनेंस देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? Am I making sense? It is her responsibility. Yes, definitely court can ask equally. यार सब जगह सभी बोलते हैं कि या वी आर इक्वल, वी आर एम्पावर्ड, वी आर इक्वल, जनरल इक्वालिटी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सभी बोलते हैं वी आर नॉट लेस देन एनी मेन. दिस इज सो सैड टू टेल दिस हियर इन दिस सेशन कि one side they say we are not less than any men, we are equally earning, we are earning more than men. लेकिन मुझे एक प्रोफाइल भी अभी चेक करो, जाकर कहीं मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, अभी चेक करो, शादी में जाओ, जीवन साथी में जाओ, या भारत मैट्रिमोनी जाओ, कहीं भी जाओ, उनके भी अर्निंग्स दिया होता है कि 7 लाख to 10 लाख. वही एक्सपेक्टेशन में क्यों नहीं डालते यार? डबल क्यों डालते हैं ये लोग? डबल डालते हैं. मुझे ये 25 to 50 लाख इनकम होना चाहिए हस्बैंड को. If I'm looking for a guy who is having earnings of more than 25 to 50 lakhs, mine is 7 to 10 lakhs, that's all, but I want husband earning more than 25 to 30 lakhs. ये क्यों यार? इक्वल बोल रहे हो ना तुम? इक्वल लोगों को ढूंढो, इक्वल लोगों को शादी करो.
How fair it is? वहां पे चाहिए, वहां पे इनइक्वालिटी नहीं चाहिए उनको, सॉरी इक्वालिटी चाहिए, वहां पे इनइक्वालिटी चाहिए उनको, हाँ वहां पे ज्यादा चाहिए। Yeah, we are living in such an unfair society. It's mostly the society which has actually caused all these things. But in Yeah. view of time, we will actually try to be more precise in answers. Yeah. We have one more question about like what kind of reliefs are available under Senior Citizen Act. Relief as in specific to what? Because I've been telling all types of reliefs, like maintenance and property related reliefs. Especially most of the cases यही होता है कि see, at the end every human being needs money for their survival. Basic amenities तो चाहिए ना, अगर वो नहीं मिल रहा है तो कैसे जिएगा? तो this act, that's why it says maintenance and welfare of senior citizen act. As the name indicates, welfare के अंदर जो भी है, welfare का मतलब क्या है? It is a wide definition. It can be anything. इमोशनल अब्यूज भी हो, सोचो कि अभी बहू घर में बैठी है, तंग करती है, बार बार तंग करती है, थ्रेट करती है कि मैं केस डालूंगी, केस डालूंगी, केस डालूंगी, डेफिनेटली यू कैन सीक रेमेडी अंडर दिस एक्ट एंड टेल टू द ट्रिब्यूनल कि ये हरास कर रही है, तुमको तंग कर रही है, देयर इज नो अदर गो, नो, you definitely you can seek. But the problem in India, it's unfair society and unfair judiciary, ki whatever husband or in-law says, it is not true. Whatever she says is true, and it is subject to matter of trial. This is very unfair, but what to do? This is our Indian system, is legal system is. And I personally request all the members who are watching or who will be watching this video in future days, please come forward to fight for a good cause. Unless until you raise your voice, unless until you come up with your own problems that you are facing, will never ever be able to achieve it. See, Domestic Violence Act, clearly it is meant for women. So sadly, mother-in-law is not covered under that act. What is this here? When you are saying woman, is mother-in-law not a woman here? How fair it is? How fair it is? Yeah. So otherwise they should simply make law, put all laws and tag that as specific to daughter-in-law. Domestic Violence Act hyphen daughter-in-law, उनको ही, उनके लिए है ये, पूरा का पूरा उनको ही बना दो यार, उनको ही बना दो, उनके लिए बना दो. Except for the tag, the act is actually currently only for daughter-in-law. Everybody knows this true, and yeah, we have to actually fight it too, so that it makes benefit. No, that is promoted by NCW, nothing else. It's for and for the government ruling parties. For them, it's only the vote bank. That's why they are making all the policies for only for women. Beti bachao. There is no beta bachao. Okay, why not? They are saying family bachao, parivar bachao. Why no? Why only beti bachao? That is all vote bank policies, nothing else. NCW is getting tons of crores of money, but old parents and women is not covered. That is all. It's money making policy and vote bank policy, nothing else. Exactly. Yeah. So the next question is like, if at all, if an incident happened 2 years back, can it still be filed under Senior Citizen Act? Is there any time limit on the incidents reported to be reported? As of now, I see no such obligations involved here in Senior Citizen Act. Ki, generally in criminal cases and all, we see even in Domestic Violence Act, it clearly says ki domestic violence should be reported within 1 year time. But as of now, there is no such statement mentioned anywhere in the Senior Citizen Act that it can be, it has to be filed within so and so time or something like that. There is no such time bound mentioned so far. Okay. And what will be the basic difference between Lok Adalat and the tribunal which accepts this Senior Citizen Act? See, Lok Adalat is actually not having all the powers the way these tribunals have. Tribunal, the Senior Citizen Tribunal Court is an administrative tribunal. No doubt, even Lok Adalat, ADR is all comes under the tribunals only. But thing is, those people do not have the powers the way these tribunals have. This Senior Citizen Tribunal have all the civil powers. Whatever civil courts have, all the powers these people have. Those powers are not being given to ADR or anybody, because those ADR people
do pass the order, but not having the powers like senior citizen tribunal. Those are two independent bodies basically. That's independent. And also here in senior citizen tribunal has got the powers to even provide imprisonment up to 6 months time. If any of the children refuses to neglect or subject them to abuse or abandon case may, they can put behind bars for 6 months. They can refer it to magistrate, again trial will start, and again that will proceed from there. But ADR will not refer the case to magistrate. It's a different independent body as together. Okay. Yeah, we have one of our brothers who tried to file a complaint under Senior Citizen Act, but seems like the response was not good. He says like when the complaint was raised with tribunal, the authority disposed the complaint saying no property was involved. When raised the point of welfare, the officer disposed mechanically. What to do? When he says no property involved, as in what? What was the In the complaint sense, basically? yeah, typically the tribunal is always saying like Senior Citizen Act is only when a property has to be evicted or a property like the property of the senior citizen has been abused or something like that. Okay. They are not taking the welfare related concerns into complaints. It's very sad. But what was the pleading by the complainant? What was their need? What was the help that they were asking from the senior citizen tribunal? Okay, yeah, like rest of the question is post that authority was insulting even the senior citizen, what kind of relief can be obtained against the authority who don't apply the act properly? As we have mentioned, children is either son or daughter or grandson, granddaughter who are not minor, and relatives who are actually legal heir of childless senior citizens. Correct. So relief can't be against a daughter-in-law who has occupied the parents' house. No, there are n number of judgments related to this. Key, see now, I will project that judgment in this PPT. So it's there in this presentation, wherein clearly says just because senior citizen have allowed their kids, children, could be daughter-in-law. Okay, it doesn't mean that they can subject them to abuse. Jo bhi ho, why not? When the word is used, legal heir, she becomes a legal heir. By definition, she becomes a legal heir. She will always be under the possession of our property, citizen's property. Okay. There are a lot of judgments in from High Court. If any, because his time is up, we have 5 more minutes. If anyone has any questions, they can reach us on MyNation.net. They can send us your questions. We will try to answer. Yeah. Nagraj, how many slides? Very few. We have come to almost end. Yeah. Few more minutes. That's it. 5 10 minutes I'll finish. Okay. Yeah. Okay. So the eviction and yeah. So other section which says about the abandonment of senior citizen, as I was telling, section 24 can be invoked to actually punish the children, whoever who abound senior citizens under section 24. It clearly says shall be punished with the imprisonment of either 3 months or fine, which may extend up to 5,000 or both. So this can be invoked in case if any children, including daughter-in-law, if she is very much reluctant to look after the parents, in-laws basically, they can definitely use this. And a couple of guys were asking me, what in case if these tribunals do not work properly, or the complications will arise? A lot of complications may arise, no doubt about it. So the subsequent sections which I'm showing to you guys now will actually give you the confidence to understand the sections and the powers of it. See, section 29 of this act clearly says power to remove the difficulties. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this act, state government may by order published in the official gazette make such provisions not inconsistent with the provisions of this act as appear to be unnecessary or expedient for removing the difficulty. So this act clearly gives the powers to the district magistrate or the tribunal courts to
formulate their own sort of rules, form their own rules and remove the difficulties, provided they publish it and make it available to others also. So this is one of the more, if any magistrate, district magistrate says that this thing is not there, we will not be able to help you, definitely you can use this section called section 25, which clearly says how to remove the difficulties from the complications involved in a case. So section 27, it says jurisdiction of civil courts barred. Somebody asked me a question, sir, what in case if civil suit is filed? The moment, no, see, it clearly says no civil court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this act applies, and no injunction shall be granted in any civil court. So this is what we were discussing. सिविल कोर्ट पे जाकर आपको केस फाइल करने का जरूरत ही नहीं है. अगर यहाँ पे आप सोचो कि सीनियर सिटीजन केस पे एविक्शन ऑर्डर के लिए आप फाइल किए हैं, she can't go to civil court and then file injunction suit there in civil court, and that will not be valid. So jurisdiction in civil court is barred. वो बार किया गया सेक्शन 27 के अंदर. So another important section is section 28, protection of action taken in good faith. So no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government or the state government or the local authority or any officer of the government in respect of anything which is done in good faith. सोचो कि सीनियर सिटीजन को कुछ अच्छा करना है, something he wants to do by removing all the difficulties. All that powers are there in this particular act. अगर वो सोचो कि कुछ complication है, he wants to do something for senior citizen, he is having all the powers to do that, and that will be valid and no suit can be filed against them. सोचो कि some ऐसा कुछ complications है, सीनियर सिटीजन को फेवर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास कर दिया है. ये ऐसा नहीं हो सकता है कि somebody goes and files a case against the state government or the district magistrate अपील पे जाकर बोल नहीं सकती कि ऐसा कर चुका है. Because anything which he thinks is good for senior citizen, he can do it. This is one of the most important section which you guys have to know, that the word good faith means a lot. Anything that they want, they can do it. So we have come to an end. One of the very popular judgment which I wanted to bring it to your notice is that merely because the parents have allowed him to live in the house of so long as his relation with the parents were cordial, does not mean that the parents have to bear the burden throughout their life. In this case, this was held in a case of Sachin and Jabulal. Same was again iterated in Dattatreya Shivani Mane versus Lilabhai Shivani Mane case, wherein son and daughter-in-law would be there residing in a first floor of a house, but they'll be keep on harassing senior citizen. Senior citizen goes to court and asks them to vacate. They say they will not vacate it because their right to reside there, but court says that they have provided you option to reside. That doesn't mean that you can take it for granted and then keep abusing them. So court says that you have no rights, you have to vacate the house. So it's one of the very popular case wherein both son and daughter-in-law were sent out of the house. So similar case was again observed, wherein it clearly said that women cannot claim right over the father-in-law's property, which is Virender Kaur versus Jitendra Kumar case. If you have any further queries, can please refer to a quick post which has been published way long back in our site. It actually gives you the entire insight of an act, what all you can do, reliefs you can get out of the Senior Citizen Act and basic needs. Basically, all this has been provided and published in our site. Please do refer this. After that, also, if you have any queries, you may call us or WhatsApp on the numbers provided on the screen. So I thank one and all for your patience and support. Please do comment if you have any queries related to this session, and stay positive, stay healthy, and don't commit suicide, leave your job or for anything. We're always there with you.
been fighting. And for any queries, please do log into our site and then drop us. We work 247 with the same spirit all the time. Lovely talking to all of you. Thank you so much for giving this wonderful opportunity to one and all. Thank you, Nagaraj, for a wonderful session. It's very good and detailed. Thank you. Thank you. And thank you for other support also, Ramesh, Vikrant, and Dr. Vikas Singh Rawat for supporting and helping and all other help. Thank you, everyone.